Hey guys, welcome back to my channel और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा how to make 3D text using Cinema 4D plus Photoshop. So we'll do the 3D work in Cinema 4D and editing of the text in Photoshop. So first of all, go to More Graph and go to Text, More Text. तो पहले आपको ये श्योर करना है कि आपके पास एक Lightroom हो, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट Lightroom होता है Cinema 4D का it isn't that good. तो जो आउटकम आती है हमारी, चाहे जितना मर्जी अच्छा टेक्स्ट बनाया हो, it's not good. Okay. So make sure you have in Lightroom. तो अगर आपके पास नहीं है, you can get the one that I'm using right now. It will be in description. So just create a text layer and click on the more text. Now go to text a box and here you can just type in whatever you want. मैं इसमें लिखने वाला हूँ for the sake of this video tiger. In the capital letters because that looks better. So you can just adjust the camera from here. This is for zoom in, zoom out. This is for moving just camera at one position. This is for rotating. That's it. So depth isn't like really much. So मैं इसको करूँगा around 100. Like now it's like more deeper than before. So to just change the font, as you can see, it's not good. तो मैं जाऊँगा font के ऊपर. As you can see, it's Sego UI. Or just select a font that I could use. This is a good font. तो ये font मैंने यूज़ किया है, इसका नाम है Long Haul. So it's a really good font. Okay. So अब आपको डबल क्लिक करना है एक साइड पे so that you have a material. और अब इस मटेरियल के ऊपर डबल क्लिक करो और you will get another dialog box like this. And what you're going to do now is right click on the little ball or the sphere and just click on object soft shadow. Now अगर आपको अपना टेक्स्ट बनाना है like red, blue or something like that, you could do here. You can do it here, but I won't recommend you doing that because doing it in Photoshop is like more better, because you can just do much more in Photoshop rather than doing it in Cinema 4D. Okay, so I would like to get this thing as white only. So just to put the material into your text, just drag it out into your text. Well, it was before white and फिर से white है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. तो अगर आपको चेक करना है बिना सेव किए इमेज या आपका रेंडर कैसा हुआ है, you can just click on this little render view. Okay, it's called render view. Just press OK. One eternity later. And as you can see, it's not really bad. It's good. So just to go back, just press Ctrl Z, and here you are. So हम जो फोटो को सेव करेंगे या फिर इमेज को सेव करेंगे उसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे. फर्स्ट इज गोइंग टू बी द 3D पार्ट, सेकंड इज गोइंग टू बी द 2D पार्ट. बिकॉज अगर आप उसको बाद में सेलेक्ट करेंगे तो समटाइम्स द डिटेल्स आर मिस्ड. सो आई एम जस्ट गोना डू इट इन दैट वे. तो पहले हम इसको एक पाथ दे देंगे जहाँ पर ये सेव कर सकें. ओके, जस्ट गो फॉर डेस्कटॉप, टेक्स्ट 3D. So as you can see, the text is rendering right now and it will be done in just a few seconds as always. Okay, so it's done. अब हम जाएंगे अपने 2D part में and I'm going to show you how to do the 2D part too. So don't just touch the camera because it's going to ruin your thing. तो फिर फिट नहीं होगा जो आपका 3D के ऊपर 2D अगर करना. So just select the layer and do the depth as 0. Now you can see कि जो हमारा text है वो बिल्कुल flat है, कोई depth नहीं है इसमें. ठीक है. So we are going to do is go to edit render settings again and in save. Now change the name of this to something else. Suppose I have it as text 2D.
So I'm gonna render it now. Okay, so it will not take much time. So अब मैं करूँगा move Photoshop में. So yeah, see you there. Meanwhile, back in the lowlands. Okay, so now we are in Photoshop, or it doesn't matter whatever version of Photoshop you have, but you must have Photoshop at least. Okay, so you may use C6 version of this, CS6 version of this, or it could be CC version. So first of all, just import both of the text, go to file, place embedded. Okay, so here is the 2D part and here is the 3D part. So पहले हम 3D part को import करेंगे. So just tick. So now just do the same thing और import करो 2D part, or you can say the upper part. तो अब हम क्या करेंगे, hold control, select both of the files from here. Now press Ctrl G. तो resize करने के लिए Ctrl T and hold Shift and Alt together and go to the corner of the layer or image and just scroll it down or move it down. That's good. So अब हम जाएंगे group 1 में, but let me just get a darker background because I don't see anything. Okay, that's better. तो पहले हम क्या करेंगे, हम 2D part को ऐड करेंगे through blending options. So right click on the 2D part, go to blending options and here पहले हम जाएंगे gradient overlay में. So click on the gradient box and as you can see I have a lot of them here. पर मैं आपको सिखाऊंगा how to create your own. So select any of it you want. So मैं black to white select करूँगा और darker part में मैं darker color apply करूँगा. Suppose it's blue. और white part में मैं lighter part of the blue choose करूँगा. तो मैं सेम कलर पिकर से सेम कर दूँगा कलर और इसमें जाकर उसको थोड़ा सा लाइट कर दूँगा so that it look better or good. So that's how you do it. पर I will keep it at black to white और मैं इसकी opacity थोड़ी सी कम कर दूँगा like this. और मैं जाऊँगा inner glow में and keep it as overlay and just choose the size as you like. Okay, as you can see you get a kind of metallic look और ये काफ़ी अच्छा दिखता है. मैं अभी ओके दबा दूंगा और अब हम सेम थिंग करेंगे 3D पार्ट के साथ. पर इस 3D पार्ट में मैं थोड़ा ओपेसिटी कम करूंगा ग्रेडियंट की, क्योंकि हमें सेम लुक नहीं चाहिए पीछे भी और आगे भी, क्योंकि फिर इट विल लुक लाइक रियली बैड. Okay, that's better. So अगर आप चाहो तो इसमें एक just बैकग्राउंड डाल सकते हैं if you want. Delete the black color and create a new layer. और तो अगर आप चाहो तो इस लेयर को, इस ग्रुप को एक लेयर में बना सकते हो by merging it through Ctrl E. So now you get a layer of it. तो मैं क्या करूँगा अब create a new layer. अब डाउन लेयर को मैं सेलेक्ट करूँगा, Ctrl D दबाऊँगा और Shift Alt and stretch and just bring down the opacity a little bit and yeah, black color. So that's it for the video guys. I hope you like it. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. And yeah, I'll see you guys in my next video. Till then, stay awesome and keep creating something every time, at least on your notebook. So bye, see you next time.